Good morning, all my dear students. How are you all? I hope you all are doing great at home. Myself, Miss Rupal Barot, your EVS 1 teacher. Students, in our previous lecture, I explained you the first lesson of your EVS 1 subject. The name of the lesson is the life cycle of animals. So, first of all, we will revise the lesson once again in short, and after that, I'll give you the notes of the lesson. पहले लेक्चर में मैंने आप लोगों को EVS 1 का लेसन नंबर 1 एक्सप्लेन किया, समझाया. सो आज हम लोग पहले वो लेसन को एक बार वापस से रिवाइज करेंगे और उसके बाद मैं वो लेसन के नोट्स आप लोगों को दूंगी. सो फटाफट से पहले लेसन को रिवाइज करते हैं और उसके बाद नोट्स स्टार्ट करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, EVS 1 lesson number 1, the life cycle of animals. In this lesson we learned that there are few animals who lay eggs and some animals are born from their mother's tummy. We know about hens who lay eggs, but there are ants, fishes, frogs, etc. etc. ये लेसन में हमने सीखा कि ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो अंडे देते हैं, लेकिन ऐसे भी एनिमल्स हैं जो अपने माँ के पेट में बड़े होते हैं और वहाँ से ही पैदा होते हैं. We know that a hen gives eggs. Hen lays eggs. हमें मालूम है कि मुर्गी अंडे देती है, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो अंडे देते हैं, जैसे कि चींटी, मछली, मेंढक वगैरह वगैरह, लेकिन उनके अंडे बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम लोग उन्हें देख नहीं सकते. We learned about hatching also, where mother hen sits on her eggs so that the chick can grow inside the egg. और हमने समझा कि कैसे मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठकर उन्हें गर्मी देती है. दैट इज कॉल्ड हैचिंग. हैचिंग का मतलब होता है अंडे सेना. So what exactly hatching means? When a hen sits on her eggs to give them warmth, she is said to be hatching her eggs. When a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive and she attacks anyone who tries to go near the eggs. जब मुर्गी अपने अंडे सेती है तो वो बहुत आक्रामक हो जाती है और जो भी उसके अंडों के पास आने की कोशिश करता है वो उस पर हमला करती है. We also understood about metamorphosis and how it takes place in a plain tiger butterfly and the different stages of it. प्लेन टाइगर बटरफ्लाई के उदाहरण से हमने सीखा कि बटरफ्लाइज का जीवन चक्र क्या है, उसके अलग अलग स्टेजेस क्या हैं. देयर आर 4 stages of growth in a butterfly: eggs, larva, pupa and adult. तितली के जीवन चक्र के 4 स्टेजेस हैं: एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. The female plain tiger butterfly lays its eggs on the milkweed or rui plants. फीमेल में प्लेन टाइगर बटरफ्लाई रुई प्लांट्स पे अपने अंडे रखती है. आफ्टर 6 to 8 days द लार्वा इमर्ज फ्रॉम एग. 6 से 8 दिन में उसमें लार्वा पैदा होता है. दैट इज कॉल्ड द
कैटरपिलर, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैटरपिलर. It takes 10 to 12 days for the caterpillar to grow fully during this stage. ये स्टेज में कैटरपिलर 10 से 12 दिन तक रहता है. In this stage, the caterpillar sheds its skin 4 times. ये स्टेज में कैटरपिलर 4 बार अपनी पुरानी चमड़ी गिरा के नई चमड़ी धारण करता है. After it is fully grown, the caterpillar secretes a liquid from its lower lip, which resembles a silk thread. ये स्टेज पे कैटरपिलर अपने निचले होठ से सिल्क के धागे के जैसा लिक्विड निकलता है. The caterpillar weaves a pupa or chrysalis. After 11 to 12 days, a fully grown butterfly emerges from the chrysalis. The butterfly has 6 long legs and colorful, beautiful wings. This is the life cycle of a plain tiger butterfly. Now students, we will start with the notes of the lesson. Students, please be ready with your combined book number 1. Students, in 4th standard, you have to write with a pen. And those who has not purchased the books yet, start writing in your rough book. Students, please remove page number 82 of your combined book number 1. Lesson number 1, the life cycle of animals. Now, question number 1 is fill in the blanks. Question number 1A. The female butterfly lays dash on the leaves of a plant. So, your answer is eggs. EGGS. The female butterfly lays eggs on the leaves of a plant. Question number 1B. The larva of a butterfly is called a dash. So, in the dash you have to write caterpillar. CATERPILLAR. The larva of a butterfly is called a caterpillar. Question number 2. Say true or false. A1. A lamb emerges from an egg. It is true or false? So it is false, because a lamb emerged from her mother's tummy. So question 2A, your answer is false. FALSE, false. Question 2B. We cannot easily see the eggs of an ant because they are very tiny. So it is true. Question number 2B is true. TRUE. Now C1. When the caterpillar emerges from the egg, it is not very hungry. So it is false, because when the caterpillar emerges from the egg, it is very hungry. वो बहुत भूखा रहता है. और यहाँ पे लिखा है it is not hungry. So your answer is false. Now students, remove page number 83. Question number 3 is an activity. Draw and color the picture of a plain tiger butterfly.
So this is your homework. In the box you have to draw the picture of a plain tiger butterfly. Understood all of you? Now question 3b. Collect colorful pictures of other butterflies and paste them in your notebook. Again, it is an activity. You have to collect the pictures of different butterflies and you have to then paste it in your notebook. Now, question number 4. Say yes or no. A1. Do kittens come out of eggs? So your answer is no, because kittens come out from their mother's tummy. So your answer is no. B1. For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its female will lay eggs is fixed. So your answer is yes. C1. A hen emerges from its chrysalis. So your answer is no. Now number 1. Define from summative assessment. A1. Hatch means you have to write the definitions. So number 1. A. Hatch. When a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. I am repeating once again. Hatching means when a hen sits on her eggs to warm them, she is said to be hatching her eggs. B1. Molts. To shed old skin to make way for new growth. Molt means to shed old skin to make way for new growth. Now C1. Metamorphosis. As butterflies grow, they pass through 4 stages. These are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. Students, again I am repeating the definition of metamorphosis. Please check your answers once again. As butterflies grow, they pass through 4 stages. These are egg, larva, pupa and adult. The adult stage is called butterfly. Now D1. Chrysalis. The pupa stage of butterfly is called a chrysalis. The pupa stage of butterfly is called a chrysalis. Now question number 2. Give reason. A1. Hen becomes aggressive when she is hatching her eggs. जब मुर्गी अपने अंडों को सेती है तो वो आक्रामक क्यों हो जाती है? आंसर इज when a hen is hatching her eggs, she becomes aggressive for fear of their safety. She attacks anyone who tries to go near the eggs. जब मुर्गी अपने अंडों को सेती है तो वो बहुत आक्रामक इसलिए हो जाती है क्योंकि उसे अपने अंडों की सेफ्टी की
फिक्र रहती है और जो भी उनके पास आने की कोशिश करता है वो उन पे अटैक करती है। आई एम रिपीटिंग द आंसर वंस अगेन। क्वेश्चन नंबर 2A. When a hen is hatching, hatching, hatching her eggs, she becomes aggressive, aggressive, aggressive for fear of their safety. She attacks, attacks, she attacks anyone who tries to go near the eggs. Now question 2B. When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. Answer. The growth seen in the caterpillar is very rapid. It starts eating very fast as soon as it comes out of the egg. कैटरपिलर का ग्रोथ बहुत जल्दी से होता है, इसलिए वो बहुत जल्दी भूखा हो जाता है। आई एम रिपीटिंग द आंसर। स्टूडेंट प्लीज चेक योर आंसर। द ग्रोथ, GROWTH, the growth seen in the caterpillar is very rapid. It starts eating very fast as soon as it comes out of the egg. Now question number 3, answer in brief. A. Why must the hen sit on her eggs? मुर्गी अपने अंडों के ऊपर क्यों बैठती है? Answer is warmth is necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hen sits on the eggs. चूज़ों को बड़े होने के लिए क्या चाहिए? वार्मथ चाहिए, गर्मी चाहिए। इसलिए मुर्गी अपने अंडों के ऊपर बैठ के उन्हें वार्मथ देती है, गर्मी देती है। आई एम रिपीटिंग द आंसर वंस अगेन। Warmth is necessary, NECESSARY, necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hen sits on the eggs. Question 3B. Which are the 4 stages of the life cycle of a butterfly? बटरफ्लाई के जीवन चक्र के मुख्य 4 स्टेजेस कौन से हैं? सो द आंसर इज द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई आर एग, लार्वा, प्यूपा एंड एडल्ट. Once again I am repeating the 4 stages of the life cycle of butterfly are egg, larva, pupa and adult. Now question 3C. Which changes take place inside the chrysalis of the plain tiger butterfly? chrysalis stage में प्लेन टाइगर बटरफ्लाई में क्या क्या चेंजेस होते हैं? सो द आंसर इज important changes take place like its legs grow longer, it gets attractive wings, its growth is completed inside the chrysalis. ये स्टेज पे उसको उसके लेग्स ग्रो करते हैं एंड उसके ऊपर का अट्रैक्टिव विंग्स आ जाते हैं और उसका ग्रोथ ये स्टेज पे कंप्लीट होता है. इम्पॉर्टेंट, IMPORTANT, important changes take place like its legs grow longer, it gets attractive,
ATTRACTIVE, attractive wings. Its growth is completed. COMPLETED, completed inside the chrysalis. CHRYSALIS. Now question number 4. Explain the following. A. It takes 20 to 22 days for a chick to emerge from a hen's egg. मुर्गी का अंडा 20 से 22 दिन में अंडे में से मतलब मुर्गी का चूजा 20 से 22 दिन में अंडे में से बाहर आता है. Would the young ones of other birds also take the same number of days to hatch? बाकी के बर्ड्स भी इतना ही टाइम लेते हैं क्या? सो द आंसर इज डिफरेंट बर्ड्स टेक डिफरेंट नंबर ऑफ डेज टू हैच. अलग अलग बर्ड्स का अलग अलग दिन में वो ग्रो करके बाहर आते हैं. द डेज आर नॉट फिक्स्ड, नॉट कन्फर्म. ओके, सो आई एम रिपीटिंग द आंसर वंस अगेन. Different, DIFFERENT. Different birds take different number of days to hatch. Now page number 85. Question 4B. You must have seen dragonflies over grass. Which stage of their life cycle is this? The egg, larva, pupa or adult? So the answer is adult. ADULT. C1. When you take a bunch of a leafy vegetable to sort it, you may find holes of different sizes in the leaves. Some leaves may have been nibbled at the edges. What do you think is the reason for that? जब हम लोग लीफी वाले पत्ते वाले वेजिटेबल साफ करते हैं तो उसके ऊपर हमें होल दिखाई देते हैं, कटी हुई दिखाई देती है. उसका रीज़न क्या है? सो द आंसर इज the caterpillar begins to nibble and eat the leaf, hence leaves have holes. Once again I am repeating, students please check the answer. The caterpillar, CATERPILLAR, caterpillar begins to nibble, NIBBLE, and eat the leaf, hence leaves have holes. जब कैटरपिलर बाहर आता है तो वो बहुत भूखा रहता है और जो पत्ते पे वो बॉर्न होता है उसे वो खाना स्टार्ट करता है. इसके लिए वो लीफ पे हमें होल्स या उसके जो कटी हुई दिखाई देती है. दिस इज द रीज़न फॉर दैट. नाउ क्वेश्चन 4D, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम लेसन नंबर 1. When you take some pea pods to shell, you sometimes see tiny green living things inside the pod. Which of the 4 stages of the life cycle of an insect are they? जब हम मटर साफ करते हैं तो कोई में हमें ग्रीन कलर के कीड़े दिखाई देती है. तो ये कीड़े कौन से स्टेज में रहते हैं? सो द आंसर इज egg, larva, pupa, adult are the 4 stages of the life cycle of an insect. The tiny green living things inside the pod belong to the larva stage.
Once again I am repeating the answer. Egg, larva, pupa and adult are the 4 stages of the life cycle of an insect. The tiny green living things inside the pod belongs to the larva stage. So students, here we have completed the notes of this lesson. You have to complete your combined book and keep it ready. Bye everyone. Take care.